All right, hello everyone. So it's AJ here, and today's market will be made by me. So let's understand what has happened today in the markets and how we can trade for tomorrow. First of all, निफ्टी में जो ये बड़ा सेल ऑफ आया था उसके बाद में वो वी गॉट टू सी ए गैप डाउन ओपन एंड देन इंट्राडे में वी हैव सीन अ गुड अप ट्रेंडिंग डे विच हैज कवर्ड ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस सेल ऑफ. तो ऐसे केसेस में जनरली ट्रेड कैसे करना चाहिए? So there is a possibility that we might open with a little bit of flat or a gap open tomorrow. But let's just say we are going to discuss multiple scenarios in what cases to do exactly what. So in this case, if we see अगर इस पूरे सेल ऑफ का हम 61.8% रिट्रेसमेंट निकालते हैं दैट कम्स अराउंड 21,357. Now interesting thing is this level also matches up with the resistance that we have on the charts, that is this resistance. यहाँ पे जो multiple times टेस्ट होके ब्रेकआउट हुआ था ये वाला रेजिस्टेंस प्लस सपोर्ट लिया था, so this resistance is going to be pretty important. So if tomorrow's open is with a gap up and we are not able to cross 21,358 and यहाँ पे अगर कोई sideways scenario मिल जाता है we get any bearish setup, then there is a probability कि हमें एक अच्छा खासा short trade मिलेगा for a test of this. Now 21,187, 190, almost 21,200. This should act as a support for tomorrow, and I think this should also remove some of the weaker long that might have entered today. एक sharp selling अगर इंट्राडे में आ गया तो there is a probability कि फिर से एक और एसलेंटिंग जैसा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है. सो इट्स ओवरऑल लिटिल बिट ऑफ साइडवेज टू बाय ऑन डिप सॉर्ट ऑफ सिनेरियो. लेकिन अगर हमें रेजिस्टेंस के पास में कोई बेरी सेटअप मिला देन इन दैट केस वी माइट गेट अ गुड शॉर्ट ट्रेड. लेकिन वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे फिर से हमें कोई बुलिश सेटअप अगर मिलता है देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी हम फिर से इस रेंज प्ले में जा सकते हैं. सो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रेंज बाउंड डे इन बिटवीन 21,357 से लेकर के 21,180. ओके, सो आई होप द व्यू इज क्लियर. On either side, I think we should get a good tradable move in Nifty tomorrow. Now, this exact same analysis will get replicated on Sensex since the structures are exactly almost the same. So as you can see, if we mark the 61.8% retracement on Sensex, you'll see that 71,151, मतलब 71,150 is sort of a resistance on the chart जो horizontal lines resistance के साथ में मैचअप हो रहा है. So this should act as a important resistance tomorrow. That means the same thing. सिंस इसका एक्सपायरी है तो हमें एक अच्छा खासा प्रीमियम्स का मूव भी देखने के लिए मिल सकता है. सो एनी रिजेक्शन फ्रॉम 71,150 शुड मूव सेंसेक्स टुवर्ड्स दिस लेवल 70,628. वी शुड ऑल्सो एक्ट एज अ सॉर्ट ऑफ एसलेंटिंग फॉर द लेट लॉन्ग्स जो यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेंगे. एंड ऑब्वियसली जब तक प्रीवियस डे का लो इंटैक्ट है दैट मीन्स 70,302, तो बेसिकली दिस इज एन इनगल्फिंग कैंडल. तो ये कंसेप्ट है दैट till the price holds in between the engulfing candle with a green closing, there is a possibility कि हमें ऊपर की तरफ रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है. बट दिस दस छोटे छोटे जो डाउन स्पाइक्स है वो आते रहेंगे. सो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द लोकेशंस देयर एंड सिंस इन इंट्राडे वी आर लाइकली टू गेट मेनी सच अपॉर्चुनिटीज देयर एंड इफ वी गेट अ रिजेक्शन हियर वी कैन गेट टू सी दिस मूव. सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर टुमारो. निफ्टी के जैसा ही सेंसेक्स में ये रेप्लिकेट हो जाना चाहिए. So the range for Sensex should become, this should be a support 70,600 and 71,150 should be a resistance. So obviously इसका अगर breakout हो गया then we should get to see this level. लेकिन ये level बड़ा है, so intraday में जो भी resistances form होते जाएंगे we have to follow those. So I hope the view is clear. Let me also check on to Nifty Bank. Since Bank Nifty का जो structure है that is very interesting because Bank Nifty has been the most bullish today. आज अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट्स के चार्ट में या फिर ओवरऑल इंट्राडे की चार्ट में आपको ये दिखेगा कि बैंक निफ्टी हैज़ गॉन अप द बेस्ट. मतलब यहाँ पे क्या है कि अप मूव जो है बॉटम से लेकर आप देखेंगे तो इट हैज़ ऑलमोस्ट गॉन अप 1,000 पॉइंट्स, 1,000+ पॉइंट्स. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि दिस शोज दैट दिस इज द मोस्ट बुलिश इन ऑल अदर इंडाइसेस, इवन बेटर देन फिन निफ्टी एज वेल. सिंस फिन निफ्टी भी इतना ऊपर नहीं गया, स्पेशली ये जो सेल ऑफ है उसका 61.8% के ऊपर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आ गया है. तो जनरली विल हैव टू अज्यूम दैट यस दिस वाज जस्ट अ शेकआउट, दिस डाउन मूव वाज जस्ट अ शेकआउट फॉर द लॉन्ग्स एंड ऑल्सो दिस डाउन मूव हैज कंप्लीटेड द गैप फिल ऑफ दिस लेवल. दैट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट यस जो ऑब्जेक्टिव था इस मूव का वो कंप्लीट हो चुका है. नाउ बायर्स हैव टेक कंट्रोल. यहीं पे अगर होल्ड हो जाता है प्राइस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें फिर से नए हाइज देखने के लिए मिल सकते हैं विच इज़ अराउंड
48,290. Okay, so बैंक निफ्टी का जो प्लान है दैट इज गोइंग टू बी इवन सिंपलर देन निफ्टी, बिकॉज अब यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ एक सपोर्ट है, दैट इज now if the since bank nifty has already crossed this 47,646, entire structure below this 47,650 actually get considered as a bear trap. तो जब तक प्राइस इसके ऊपर होल्ड करेगा we'll have to look for the opportunities to buy on dips. मतलब for example if just in case बैंक निफ्टी comes near 47,650 and यहाँ से हमें कोई भी bullish sign अगर देखने के लिए मिलता है then there is a probability कि we should get to test the previous day high and then again यहाँ से ऐसा कुछ move and then eventually we should get to see this ETH. So this is overall scenario for बैंक निफ्टी now. Just in case Nifty अगर gap up खुल जाता है, also Bank Nifty also opens with a gap up. In that case, we'll have to find a resistance, and if there is a little bit of bearish scenario, I think the short preference will be better on Nifty rather than Bank Nifty because Bank Nifty is already strong. अगर strong into short करते हैं तो generally हमें downside की तरफ जो momentum वो मिलता नहीं. So this might just be a resistance in Bank Nifty 48,000 which is also rounded off level. तो यहाँ पे हमें एक resistance की तरह ये scenario देखने के लिए मिल सकता है. There is a consolidation here, थोड़ा बहुत यहाँ पे SLNT, and then if you get to see a breakout, then we should not hesitate to take a long and we should get to see this target. So the plan is clear. More importantly, the levels of Bank Nifty should be very clear because they are very clear on the chart, and this is beautiful chart. I mean, you see this gap fill is complete properly, यहाँ से bounce लिया, then पूरा दिन ट्रेंडिंग डे रहा, प्लस जो सपोर्ट था पहले that acted as a sort of resistance, then उसका breakout हुआ है. So this is a very beautiful structure to look at into the markets because यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी बार आपको एक perfect setup मिलेगा आई थिंक सो, कि यहाँ से इसका अगर रिटेल देखने के लिए मिलता है तो this will be a perfect opportunity to look for any bullish setup and then we should get to see this move. So I'm looking forward to such move. And most important thing tomorrow, it is going to be mid cap nifty expiry as well, since 25th of December is a holiday, so Monday is a holiday, so mid cap nifty का जो expiry है that is going to happen tomorrow itself. So we have the Sensex expiry as well, we have mid cap nifty expiry as well, so much fun there. Okay, ठीक है. तो यहाँ पे as you can see हम एक retracement mark करेंगे from this point to this point. So something similar to Nifty as well. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 61.8% का जो लेवल है 10,202 is also aligning with the support on the chart. So this is a very interesting thing that कि जब भी फिबोनाची का कोई लेवल चार्ट्स पे किसी लेवल के साथ में मैचअप हो जाता है, जनरली वी हैव टू अज्यूम that is going to be important level as a reaction, कि वहाँ पे प्राइस टच करते कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा. we should see ब्रेकआउट हो गया तो भी अच्छा मूव आ सकता है, एंड रिजेक्शन आ गया तो भी अच्छा रिजेक्शन आ सकता है. ओके, सो इक्विवेलेंट टू निफ्टीज 21,357 हमारे पास मिड कैप निफ्टी का जो लेवल है दैट इज 10,203. तो सो ऑन द सपोर्ट एंड आई थिंक वी शुड गेट टू सी दिस लेवल एज अ मेजर सपोर्ट, बट दिस रेंज इज क्वाइट बिग नाउ since mid cap nifty has fallen most than nifty. Mid cap nifty का जो fall था एक्चुअली 5% था in a single, I think in 2 days, लेकिन सिंगल डे में ऑलमोस्ट 4% गिरा था ये. सो दैट वाज अ बिगर फॉल, बट इट इज क्लोजर टू 61.8%. तो इसका एक अपसाइड ये होता है कि दैट इफ इट क्रॉसेस एंड होल्ड्स अबव इट, then it might create this sort of range here, maybe for a few days or maybe till next maybe 1 week, then we might get to see this move taking out these highs. Now I'll show you one interesting thing about such kind of sell-offs and recoveries. अगर आप डेली चार्ट्स में जाएंगे तो मिड कैप निफ्टी में हमने exactly सेम टाइप का सेल-ऑफ दिखा था. इफ यू रिमेंबर करेक्टली, you'll see on this day, this was 12th of September, Tuesday, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेल-ऑफ देखने के लिए मिला था. The next day we got to see inside the candle close, उसके बाद next day we got to see this green candle, and then few more weeks actually it went sideways, then it made a bear trap and then it initiated the rally. So ये था एक scenario that कि ऐसे ये workout हो सकता है. The another scenario that it can work out is like this, कि यहाँ पे ये अगर it takes out these highs and then it consolidates around here, makes a compression here and then breaks out. Every time ये bear trap बनाने की ज़रूरत नहीं होती. Price just wants to remove all of the weaker hands who are मतलब participating in the market. Obviously एक दिन के fall से you can just assume that most of the weaker hands, weaker longs must be out of the market. And जब भी आपको इसका breakout देखने के लिए मिलेगा, I mean if you mark this highs and जब भी इसका breakout हमें देखने के लिए मिला mid cap nifty में, that was 90 to 40, इसका जब ब्रेकआउट देखने के मिला, we have seen almost 1,000 points of rally after this, which was 10%.
So just imagine whenever such kind of levels or like such kind of candles highs get taken out, that means whenever 10,405 is going to be taken out in mid cap Nifty, I think we should see a major move on the upside here again. Okay, so we should be ready for it. Anytime this stays taken out, this can happen in few days, few weeks, or it can happen tomorrow as well. Tomorrow थोड़ा possibility कम है since it's a little bigger move, but still you just have to be ready for it. Whenever such kind of bigger shakeout, इनके highs जो भी होते हैं, they get taken out, we might see a bigger move on the upside. So इसका और एक example आपको मैं दिखाता हूँ निफ्टी में in the daily chart if you see. Just few days back, if you will see, this was a major reversal sign on Nifty. यहाँ पे एक reversal engulfing candle बना हुआ था. Next day we got to see this reversal around here, and then we saw major move around here. So whenever major reversal signs get taken out, मतलब जो वो जब भी negate हो जाते हैं, then in those cases there is a possibility that कि इससे बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा. The same thing is going on right now कि इसका जब भी हाइस कटेगा 21,593, it might be happening next week or in next few days, लेकिन जब भी हाइस कटेगा there is a probability that we might see a major move on the upside again. So उससे पहले I think so most of the weaker hands 2-4 दिन sideways यहाँ पे लेके जाके कितना sideways जाएगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन few more days it can take sideways, and then जब भी breakout आएगा, trust me the breakout is going to be big and we are going to see a bigger rally in the markets. The condition remains that ये जो engulfing candle का lows है that is 21,000, basically assume करके चलते कि जब तक 21,000 intact है तब तक ये highs कट जाने का बहुत high chances है, and we might see 22,000 and even higher levels very soon. So same logic of mid cap Nifty, if these highs get taken out in Nifty 21,593, then there is a possibility हमें और एक बड़ा मूव ऊपर एक तरफ देखने मिल सकता है. All the weaker hands are out and now markets are ready to scale new highs. Okay, so that's the overall scenario. I hope you got some insights from this video to trade, and I think I hope they will help you to trade in actual live markets tomorrow. So that's it for the day, guys. Have a great day, and see you soon. Bye.